आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन या अली मदद। लास्ट वीक हमने we had talked about to recite our dua with the understanding, with the meaning, knowing the meaning of the dua. क्योंकि मौला का फरमान है कि you must know the meaning of the dua, not the translation of the dua. और लॉजिक हम समझ गए थे कि अगर ये फरमान होता ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने का, then how would we apply this फरमान for the जमात कि जहाँ पर Arabic is their language. So what translation would they be looking for if they speak Arabic and our dua is in Arabic? But the Farman is know the meaning of the dua, and we will give you not the entire meaning of the dua. We have a recording of those. आप सुन सकते हैं उसको बाद में. लेकिन just couple of samples from the dua ताकि हमें पता चले कि huge difference between translation and the meaning. Okay, so let's start with first part, which is Surah ALHAM. I hope you all know कि दुआ के अंदर दो सूरे हैं, Surah ALHAM and Surah Ikhlas in the part 6. दरमियान में जो 4 पार्ट हैं उसके अंदर 5 आयतें हैं. दूसरे पार्ट के अंदर जहाँ पर वकुल शहीन है वहाँ पर 2 डिफरेंट आयतों के छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं. पूरी आयतें नहीं हैं. इट्स जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ दोस 2 आयत कि जो हम दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं. फिर थर्ड पार्ट में 1 आयत है, फोर्थ में 1 आयत है और फिफ्थ में 1 आयत है. फर्स्ट एंड लास्ट के अंदर 2 सूरे हैं. सो वी कैन टॉक अबाउट दी सूरह अलहम. सूरह अलहम को सूरह शिफा भी कहते हैं और उम्मुल किताब भी कहते हैं. यू नो व्हाट उम्मुल किताब मीन्स? द मदर ऑफ द कुरान. सूरह अलहम को उम्मुल किताब यानी कि मदर ऑफ द कुरान कहते हैं. क्यों उसको मदर ऑफ द कुरान कहते हैं? सूरह अलहम को पूरे कुरान का जुज़ आयत. मदर क्या करती है? मदर नरिश करती है बच्चों को या अपनी फैमिली को. ये मदर का जॉब है, राइट? मौला अली ने फरमाया कि मैं उम्मुल किताब हूँ. मौला अली फरमाते हैं मैं उम्मुल किताब हूँ. और हम कहते हैं कि सूरह अलहम इज़ द मदर ऑफ द कुरान. इसका मतलब है कि मौला उस ज़माने में he was nourishing the Islam, the religion, and nourishing those people who were reading Quran. उनको वो नरिश करते थे. तो जिस तरह से we say Imam is our mother and father, Mullah Ali at the junction of the Tawilat, he was the mother of the Quran and he was the mother of the religion at that time. And who was the father at that time? Prophet Muhammad was the father at that time. यानी कि वो 2 अलग अलग रोल थे उस ज़माने में. आज इमाम के पास he has both roles, the role of the imam and role of the peer. He has both in him. Okay. So अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को खाली देखें सूरह अलहम्द के अंदर, you all know कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है is the door to any surah. यानी before you start a surah you say बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, and the example is like opening the door to get inside the surah. What makes us think that Bismillahirrahmanirrahim is the door?
अगर आपके पास ये डिस्प्ले होता है यहाँ पर तो आप देखते हैं कि बिस्मिल्लाह के अंदर जो बा है, जिससे बिस्मिल्लाह शुरू होता है, बा, उसका शेप आप अगर आप देखें तो ये शेप बनता है बा का. आई थिंक शी इज ट्राइंग टू डिस्प्ले. ओके. बे इन उर्दू या बा इन अरबिक. हाँ जी, right, that's it. So the alphabet ba in the front of the Bismillah, it's shaped like in the old days of Arabic, they would use ba as a symbol of a door. So if you wanted to show a door, they will draw ba without the dot on the bottom. They will draw their ba. और अगर ये निशान बना हुआ है, so people know they are talking about a door. This was the symbol of a door. And the dot on the bottom is like a key to the door. So Molali says, I am the Kitab, I am the ba in Bismillah, and I am the dot under the ba in Bismillah. Meaning, he is the key to the door, he is the door, and he is the Kitab. Bismillah की हम बात कर रहे हैं. And we all know the two famous hadith that I am the city of knowledge and Ali is its gate. I am the house of wisdom and Ali is the door to the house. And same concept, the door is presented in the ba, in the Bismillah, and Mullah Ali saying, I am the door toward the Quran, or the door of the Quran, door of the Surah ALHAM, and the key or the dot under the ba is me. So let's come back to our dua again. So when we recite Surah ALHAM, and when we recite ba or the Bismillah, the concept or the understanding we should have that we are starting with the name of Ali. Because ba equals to Ali. The dot equals to Ali. And Surah ALHAM equals to Ali. Okay, that is the concept that equally among Sunni and Shia both, they both believe in this kalam and this ahadith. तो यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कि we are biased toward Ali because we are Ismaili. This is equally understood and equally accepted by all tariqas of Islam. अच्छा, आ जाए meaning of the dua. So Bismillahirrahmanirrahim. खाली हम बिस्मिल्लाह पर पहले तवज्जो देंगे. यहाँ पर कभी कभी ट्रांसलेशन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से. यहाँ पर शुरू का कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी. ऑलराइट, अल्लाह के नाम से. दैट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में भी गलती होती कभी कभार. अल्लाह के नाम से. लिखा है शुरू. हाँ, या. So English is correct. So English is correct. Yeah. English is correct. So ट्रांसलेशन में भी कभी कभार हमको थोड़ी तवज्जो देनी हो, क्योंकि ट्रांसलेशन करने वाला अपनी खुद के समझ के हिसाब से ट्रांसलेशन करता है. But it's supposed to be in the name of Allah. शुरू करने का छोड़ दो, अल्लाह के नाम से इज करेक्ट. हाँ, अल्लाह के नाम से. अब यहाँ पर जो बात हमको सीखनी और समझनी है वो अब आ रही है, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. यहाँ पर जो है अर्रहमान अल रहीम, अरबिक के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं ऊपर अर्रहमान एंड रहीम. अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो रहमान एंड रहीम, they both mean same thing.
In the translation, there is no difference between Rahman and Rahim. कोई फर्क नहीं है. And there is a principle of the Quran when there is a word repeated like that. Allah is giving us a hint to rethink of the meaning of that word. Meaning the meanings are on two different levels. Let's look at the Rahman and Rahim. If they both mean the same thing, that He is merciful or the most merciful, then why are you repeating Allah is merciful? Allah is most merciful. Okay. Ar-Rahman. Ar-Rahman is a generic term for the merciful. So when we say Allah is Rahman, we are saying He is merciful on all the people. और कुरान में जो वर्ड होगा उसके लिए अल-नास होगा. For all mankind. For all the people. And then we will use the word Rahman. लेकिन जब रहीम की बात आती है, so He is merciful on those who believe in Him. He is merciful on those who believe in Him. अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे दिल में कॉन्सेप्ट पैदा होगा. Remember इमाम का फरमान कि when you read the Quran, it must present a concept to you. If it doesn't present a concept to you, इसका मतलब है we haven't understood it. So next time when we recite the dua, this Bismillah Rahman Rahim will present a concept to us as per Imam's Farman. क्या? Bismillah अली के नाम से, Ar-Rahman, He is merciful for all. Ar-Rahim, He is merciful for me. As a smiley, as a follower of the Imam, He is a Rahim for me. Why am I using me and not us? Because here there is a principle of taking the dua personally. If this dua is for me, and everybody who will recite the dua is for me. यहाँ पर यानी कि जब हम दुआ पढ़ते हैं तो there is a connection between you and the Imam personally. So when you recite this part, and this we haven't started the dua yet, and so we are covering the fundamental basic concept of the dua in the very first word, or the चार word जो है Bismillah Rahman Rahim. In the name of Ali, in the name of Allah, who is Ar-Rahman, merciful to all, and Rahim is merciful to me personally. ठीक है? अब आए हम इसके आयत के अंदर आते हैं हम. आप देखेंगे कि दोबारा से यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगी आगे जाकर. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. यहाँ पर very first time when I heard कि इमाम ने कहा कि you must understand the meaning of it, and when I looked at this second ayat, I started thinking, should it not be Alhamdulillah Khaliqul Alameen? Shouldn't all be praises due to the Allah who had created this world? But no, it says Rabbul Alameen. It doesn't say Khaliqul Alameen. Why? Again, what did Malapa say? When you read this, it should present a concept to you. What is this concept now? देखें आप. Alhamdulillah, the praises are due to Allah. कौन सा Allah? Rabbul Alameen, the one who nourishes the world. And we will explain the world also in a second. Rabbul Alameen. If you go back to the Bismillah Rahman Rahim, what did we talk about?
Remember we talked about Rabb, the mother, Ummul Kitab. So who's the Rabb? Ali. Mawla Ali. Do we all understand that? This is the meaning of the dua. What we are saying? The praises are due to the Rabb, the Ali, who nourishes the world. इसको कहते हैं कि when you understand the meaning, you will start to build the connections between the ayat above and ayat under. And when we look at the next one, you will understand even better why we are saying Rabb here is for the Ali. So we understand the nourishment part and we understand the Ummul Kitab part, the mother part, not the father part, the mother part. The mother nourishes the children and the family. We are those children the Imam nourishes. So यहाँ पर हम किसकी तारीफ कर रहे हैं अब? We are praising the one who is Rabbul Alameen. So अभी आलमीन के बारे में बात करेंगे. Someone asked Imam Jafar Sadiq, Ya Mullah, in Surah ALHAM, what does Alameen means? And Imam said, Alameen means your personal world. Your personal world. ना कि ये बाहर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया, हमारी खुद की ज़ाती, individual, personal world. Remember taking it personally? So now if you read this, the praises are due to the Rabb Ali who nourishes my personal world. Now just for a second, if you close your eyes and saying you are sitting in a dua, with this meaning, with this understanding, don't worry about it. You're not going to lose your focus anymore during the dua. Because now you understand exactly what you're saying, to whom you're saying, and what is Imam is doing for you during the dua. Because now you're going to have a communication with him. जब हम अल्लाह की बात करते हैं, because we have no concept of Allah, हमारे पास कोई image नहीं है, we have no direct connection with Allah. But when we talk about Ali and Imam, there's an instant connection there. There is another call of Mawla Ali, and I think it's the most beautiful call. Ali said, I will never worship Allah, the one I have never seen. मैं उस खुदा की कभी इबादत ना करूं जिसको मैंने नहीं देखा है. अगर ये अली कहता है, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए कि मैं उस खुदा की कभी इबादत ना करूं जिसको मैंने नहीं देखा है. So have you seen our Rabb? If we have seen our Rabb, then it's easy to talk, easy to have communication, easy to have a connection there. So when you talk, all praises are due to the Rabb, Ali, who nourishes my personal world. Rabbul Alameen. हाँ? Okay. अब इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा देखिए क्या लिखा हुआ है. Ar-Rahman Ar-Rahim. Remember? ऊपर भी आया है, यहाँ पर भी आया. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन. अब रब की डेफिनेशन क्या है वो बता रहे हैं कि रब की डेफिनेशन ये है कि वो अर-रहीम और रहमान है. Praises are due to the Rabbul Alameen who is Ar-Rahman and Ar-Rahim. अब ये एट्रीब्यूशन किसकी हो गई? रब की हो गई कि वो ही है who is merciful on all and he is the merciful on us. ये दोनों एक साथ इसकी, जब हम कोई भी सूरा पढ़े, कोई भी आयत पढ़ रहे हैं, तो हमको ऊपर की एक लाइन देखनी होगी और नीचे की एक लाइन देखनी होगी अगर हमको कुछ समझना है दरमियान में. That is the principle of reading Quran. कि जब भी आपको कोई चीज़ समझनी है, look at one above, look at one under,
and then you will be able to understand what you are trying to focus on, the line, the ayat you are focusing on. Okay. So we already know the Rahman and Rahim. Ab aaye Maliki Yawmiddin. And he is the one who is the Malik or the master of the day of judgment. Din ka jo word hai, you will find that word in Quran many times. Din ka matlab, वैसा तो दिन होता है, a day, but in Quran is a principle, the day is a principle. Without saying it is the day of Qiyamah, day of judgment, din always mean day of Qiyamah, day of judgment. So for example, if you say, on that day, they will see me. On that day, they will receive a liqah. On that day, they will not receive my didar. So खाली यहाँ दिन है, यहाँ क़यामत का वर्ड नहीं है. There is no क़यामत का वर्ड उधर. क्योंकि ये दिन is the principle or the कुलिया Quran, the principle of a Quran. दिन का वर्ड. Okay. अब आगे मालिक यौमिद्दीन. क्या मतलब है? अगर आप चैलेंज करें कि आपने अभी कहा कि रब इज फॉर अली एंड रब्बुल आलमीन के अली इज द वन हु इज नरिशिंग द आलमीन, ही इज रहमान एंड इज रहीम, तो क्या मालिक यौमिद्दीन में भी हम यही बोल रहे हैं कि ही इज द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट? इफ आई एम सेइंग दैट, वेयर एल्स इन द कुरान डज इट से दैट? Don't let me just skip or say things without asking. 1771 के अंदर आप जाके देखें, सूरा 17 आयत नंबर 71, वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि all the people of all the time will be called upon by their imam. और आपका इमाम का वर्ड मिलेगा उधर. They will be called upon with their imam. आप कुरान में जाकर ज़रूर देखें इस आयत को. ये हमारे तरीके की फंडामेंटल आयत है. अरबिक. अरबिक में मेरे को इमाम का वर्ड दिखाएं. या अन्नास ब इमामा, सब लोगों को अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा. देखा आपने? डे देखा, यहाँ पर सिर्फ कुलिया है जिस दिन, तो हम समझ गए कि दिन का जो कुलिया है इज द डे ऑफ जजमेंट. जिस दिन हम हर जमात को, उसके ये ट्रांसलेशन में गलती है, इमाम, इमाम का वर्ड होना चाहिए. अभी हमने आपको ऊपर दिखाया है इमाम का वर्ड अरबिक के अंदर. Someone can say, why would they not put imam in translation? If you don't believe in imam, you have no reason to be putting imam there. If you don't believe in imam, why would you put in translation imam? नहीं डालेंगे ना. इसलिए ज़रूरी है कि when and if we read Quran, we must look at the Arabic nirbid to see कि ऊपर क्या लिखा हुआ है. जिस तरह से अभी हमने बिस्मिल्लाह की बात की कि ट्रांसलेशन में लोग अपनी तरफ से ऐड करते हैं अल्फाजों को विद देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से वो ट्रांसलेशन करेंगे. अगर कोई इमाम पे यकीन नहीं करता तो व्हाई वुड दे इवन राइट कि जिस दिन हम जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे? दे डोंट इवन बिलीव इन इमाम. तो क्या लिखते हैं वो कि जिस दिन हम जमात को उसके पेशवा से लाएंगे. वर्ड्स इंग्लिश में है. यूसुफ अली के उसमें ट्रांसलेशन है इमाम. वर्ड्स इंग्लिश के अंदर है. इंग्लिश में नहीं, यूसुफ में है. यूसुफ अली में है बिकॉज यूसुफ अली इज शिया. ही बिलीव्स इन इमाम. So whoever is the translator, according to their beliefs, they change. So if we don't know Arabic, we need to read transliteration. सुन्नी का ट्रांसलेशन देखे आप, इंटरनेशनल का record. उसने बुक बना दिया इमाम को. इसलिए वन से इमाम को बुक, एक ने कहा इमाम को इमाम यूसुफ अली ने कि वो शिया है, ये बिलीव्स इन इमाम, और लास्ट वाले ने इसको पेशवा कहा. तो ट्रांसलेशन में आपने देखा कि मसला है. और यही मिस्टेक कभी कभार, एंड वी विल शो यू दैट टुडे, हमारी दुआ की बुक में अप अंटिल आई थिंक
2006 or something. There was दुआ की बुक के ट्रांसलेशन में एक गलती थी which was caught in 1995 but it did not get fixed until 2006. क्यों भाई फिक्स नहीं किया? बोला सारी किताबें पहले बिक जावे तो हम नहीं छपाएंगे तो फिक्स करेंगे. So can I just so this is also meant for you for independently, right? So like we talked about, the day of judgment is not like Qiyamat ka din, that's like one day for the whole world, but it's your own, when you die, that's when Personally, you take it personally. Yes. Yes. Perfect. Good job. Yes, take it personally. तो यहाँ पर ट्रांसलेशन को समझने के लिए हमने देखा कि किस तरह से अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो कभी कभार हम खुद कोई गलत चीज़ को सोच कर बयान कर रहे होते हैं, जबकि मीनिंग के अंदर ये डाउट खत्म हो जाता है. इसलिए इमाम emphasize for us to know the meaning of the dua, not the translation of the dua. emphasize किया मौलाना ने. ठीक है? ओके. मालिक यौमिद्दीन समझ गए अगर हम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट आयत. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ उससे ही मदद चाहते हैं. यहाँ पर जो एक वर्ड है इय्याका नअबुदु, ये जो बदू का वर्ड है ये बंदे से निकला है, स्लेव, यहाँ ओबे करना अपने मास्टर को. नीचे जो ट्रांसलेशन के अंदर इबादत का वर्ड है वो नॉर्मली ऊपर माबूद से आता है. अगर माबूद लिखा होगा ना तो नीचे इबादत लिखा होगा, यहाँ इबादत का लायक लिखा होगा कि वो इबादत का लायक है. इबादत का मतलब भी ऑल्सो स्लेवरी है, यहाँ इत्तेहाद करना है, ओबे करना है. इबादत का लफ्ज़ी मानी भी यही है. और ऊपर का जो वर्ड है बंदो एंड इबादत, दोनों के लिटरल मानी या तो रूट वर्ड्स आर द सेम. तो यहाँ पर हम सिर्फ तेरी ही इत्तेहाद करते हैं, इबादत करते हैं, सेम मीनिंग, और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं. रिमेंबर, अब हम जो भी बातें कर रहे हैं वो हम किससे कर रहे हैं? द रब अली से कर रहे हैं हम, जो भी बात हम कर रहे हैं. तो नेक्स्ट आयत, एहदिना सिरातल मुस्तकीम. यहाँ पर जो है वो किताब के अंदर ट्रांसलेशन के अंदर मिस्टेक थी, और आप देखें बिल्कुल क्या बोलते हैं, इनिसेंट मिस्टेक थी. आई वुड नॉट से दैट वाज इंटेंशनल, बट इट वाज अ मिस्टेक एंड आई विल शो यू हाउ. हमें सीधी राह दिखा. ठीक है ना, ये कुरान के अंदर है, सीधी राह दिखा. उन्होंने यहाँ से लेकर दुआ की किताब में डाला था कि हमें सीधा रास्ता दिखा, शो अस द राइट पैथ. अगर ये ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ते हैं एंड वी बिलीव इट, व्हाट आर वी सेइंग? We're saying we're not on the right path, और हमको दिखाओ what is the right path. आप समझे? Does everybody understand what he said? If you take this translation and if you put that in dua book, and if you remember the translation, and while you're saying your dua, you're saying, Ya Mullah, show me the right path. Meaning, you are not on the right path. So what is the correct translation? Even the translation, keep me on the right path. Subhan. Keep me on the right path. समझ में आ रहा है ना ये कितनी नज़ाकतें हैं. So ये पुरानी वाली में it said guide us to the right path. This is the old meaning. देखिए इंग्लिश गाइड या Guide show would be the same thing, right? Because guide us because you're not. guide is still better. Keep me. Keep Right. means you're already there. So the Yes. new book says keep me? Okay. So Yeah. this is the old book. Yeah. Keep me. क्योंकि अगर हम ऑलरेडी सिरातुल मुस्तकीम पर नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं, या मौला तो हमको सच्चा रास्ता दिखा. As an Ismaili, as a follower of the Imam,
एटलीस्ट इतना हमारे पास ईमान होना चाहिए कि हम कहें कि वी आर ऑन द सिरातुल मुस्तकीम. So Mola, now guide us on the Siratul Mustaqim. Keep us on the Siratul Mustaqim. The translation should be not guide us on, Keep guide us. us to, guide us on. On, yes. On और to का Two का फर्क है. फर्क है, yes. On and to का फर्क है. हाँ? या on and to का फर्क है यहाँ पर, क्योंकि अगर to है तो इसका मतलब अभी तक हम नहीं है. Now we are looking for their path. Keep us or guide us on Siratul Mustaqim. The path you are on, guide us on that. हाँ? तो यहाँ पर ट्रांसलेशन का फर्क था. वापस ऊपर जाना, ए दिना का जो वर्ड है फ्रंट में है, जिसका मतलब है गाइड. ए दिना यहाँ पर गाइड का आता है. अगर हमको ढूंढना है कि भाई गाइड का वर्ड कहाँ है अरबिक के अंदर, ए दिना के अंदर है. ठीक है, सिरातुल मुस्तकीम. एक और चीज़, व्हेन वी से सिरातुल मुस्तकीम, Siratul Mustaqim agar is a path, do we sit on a path? Do we walk on path? Or what do we do? Run. पैथ पे आप क्या करते हैं? हाईवे पे क्या करते हैं आप? या रोड पे क्या करते हैं? बैठते हैं कि आप गाड़ी चलाते हैं? You move. You constantly move. Personal question to myself, and all should do that. Am I sitting on Siratul Mustaqim? Or am I walking, running, moving ahead on Siratul Mustaqim? If you are just sitting on Siratul Mustaqim, मीनिंग क्या है कि हम रोड के ऊपर जाके हाईवे ले लिया, अभी उधर बैठे हुए हैं. Does everybody understand what I'm trying to say here? Siratul Mustaqim पर हमको गाइड कर, हमको चला. We should be walking, we should be running on Siratul Mustaqim, meaning हमारे मज़हब में we should be moving forward, not sitting on it. अगर हम सिर्फ शरीयत को निभाते हैं तो we are sitting on a path, we are not moving on a path. दोबारा बोले. अगर हम सिर्फ शरीयत को निभाते हैं, we are only following the शरीयत, then we are sitting on a path, we are not moving on a path. मूव होने के लिए क्या करना पड़ता है? पर्सनल सर्च करनी होती है, उस पर चलना होता है. वी शुड अंडरस्टैंड आवर तरीका, वी शुड अंडरस्टैंड आवर दुआ, एंड वी शुड वॉक ऑन इट. So in other words, we move on further from Shariat to Tariqat to Haqiqat and then seek Marifat. That's a path, right? So if we are sitting on Shariat, then we are just sitting on Shariat. So if we remember last week lecture, the question was, is there anything more in our tariqah than rites and ritual? Which is our Shariat. Rites and ritual is our shariat. The question was, is there anything more in our tariqah than rites and ritual? Meaning, are we sitting on Siratul Mustaqim or are we walking on Siratul Mustaqim? Have we moved from shariat to tariqat? Have we moved from tariqat to haqiqat? And if we are on haqiqi mazhab and haqiqi tariqah, are we moving toward the marifat? If we are not, we are still sitting. It doesn't matter which destination you are sitting on. You may be sitting on Shariat, you may be sitting on Tariqat or Haqiqat. But if you're sitting, then you are sitting. You should be moving, you should be walking, you should be running toward the next level up. आपने देखा कि कितनी यानी कि मायने में मज़ा है और कितनी समझ है मायने के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर नहीं. ये ऐदिन सिरातुल मुस्तकीम, फिर सिरातुल लज़ीना अनअमता, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात है अनअमता. ओके, कि गाइड अस. सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, 3 लोगों की बात हुई है. नॉर्मली इन ट्रांसलेशन वी अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट 2 काइंड ऑफ पीपल. एक वो है जो अच्छे हैं और चलते हैं, और एक वो है जो बुरे हैं और नहीं चलते हैं. एक्चुअली यहाँ पर 3 किस्म के लोगों की बात है, 2 किस्म के नहीं, 3 किस्म के लोगों की बात है. लेकिन सबसे पहले उन लोगों की राह पर जिन पर तूने इनाम किया. आई वांट टू कवर देयर पार्ट फर्स्ट. Walk us
or guide us on the path, किसका path? उन लोगों का, those कि जिस पे तेरा इनाम हुआ है, Who have been rewarded. the one who has been rewarded. और किसी के रास्ते पे हमको नहीं चलना है. आज दुनिया के अंदर कौन है जिसको हम कहते हैं कि he has been rewarded by all the marifat, by all the nur, by all the wisdom? कौन है वो? इमाम है. हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि guide us on the path of the imam, ताकि हम इमाम के पीछे पीछे चलें. नंबर 1 ये यहाँ का इस आयत का जो निचोड़ है वो यहाँ पर है. फिर कहता है कि कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है. ठीक है. ना कि जिन पर गजब किया गया और ना गुमराहों का. तीन हो गए. एक है जिस पर गजब हुआ और एक है जो गुमराह हो गया. ठीक है. और सेकंड वाले को लेते हैं हम कि जिस पर खुदावंद ताला नाराज हुए थे. अगर हम इस्लाम के ज़माने को सोचें, हम we have to take a journey back. Okay, there were 3 kind of people at the time of Prophet Muhammad. One who accepted Prophet and Islam, one who did not accept it. जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसकी हमको वरी नहीं है. जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया बिना बराबर ये बात है. लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया एंड देन वहां पर बैठकर उन्होंने मजहब के अंदर खराबियां पैदा की, है ना. इसको मुशरिकीन कहते हैं. क्या करते हैं मुशरिकीन? दे हाँ वो मजहब को पालते हैं, फिर मजहब के अंदर रहकर मजहब के अंदर खराबियां पैदा करते हैं. और हमारे पास हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी मिसालें हैं, एंड वी ऑल नो दोज एग्जाम्पल एंड दोज नेम, सो आई डोंट नीड टू मेंशन देम. कि वो इस्लाम को कबूल करते हैं और फिर अंदर बैठकर वो इस्लाम के अंदर खराबियां पैदा करते हैं. मुनाफिकीन है वो काफिर नहीं है, मुनाफिकीन है. तो मुसलमान हो गया, दूसरी तरफ काफिर हो गया, दरम्यान में मुनाफिकीन थे कि who had accepted it and then they were not true believer of Islam. So वहीं बैठकर वो इस्लाम के अंदर खराबियां पैदा करते थे. And what they were doing, they were targeting and killing the imams. Remember, none of the imams were martyred by non-Muslim. None. 21 imams were killed, all by Muslim, including Mola Ali. Mola Ali की story I like to tell, क्योंकि यहाँ से हमको अंदाज़ा होता है कि in the current time, in 1400 years ago, there was a current time, present time. This Abdul Rahman Muljim, to be said that he was the one Muslim, when there was a competition held, who can say more Nawafil ki namaz. You know Nawafil किसको बोलते हैं? Extraordinary, not the 5-time namaz. Who can say more namaz than 5 times? He will win the competition every single time. During his 24 hours, he will say hundreds of namaz. इतना नमाजी था वो. And I mean, no one can win or no one can recite more namaz in a day than him. That's how good he was following the order of the Nabi by reciting Nawafil ki namaz. पढ़ता था वो. Extraordinary namaz पढ़ता था वो. But then what happened? He killed Mola Ali. अब देखा वही कि जो मोहम्मद को मौला बोलता था और अली को उसने कत्ल किया. यानी कि पंचतन पाक के अंदर जिसको शामिल किया गया उसी को उसने कत्ल कर दिया. यानी दे swore to protect the पंचतन पाक and then he was the one who killed him.
इसको मुशरिकीन कहते हैं, मुनाफिकीन कहते हैं, और खुदा का उन पर गज़ब है। ना कि गुमराह होगा, जो गुमराह है वो गुमराह है। There is no fight, there is no argument, there is nothing there. They just did not believe, they just did not believe. यानी उससे वो लोग बेहतर हैं कंपैरिजन के अंदर कि जिसने बिलीव ही नहीं किया। तो कुरान के अंदर एक आयत है, ओ बिलीवर बिलीव, यानी कि डोंट जस्ट से द कलमा, ट्रूली बिलीव। नाउ वी नीड टू टेक दैट पर्सनली, रिमेंबर, टेक इट पर्सनली। Don't be just a smiley. Believe in the tariqa. Follow the tariqa. Follow the imam. Follow the farman. Oh believers, believe. हमारे लिए ये, and yeah, I will start with the imam's farman, and then we will go to the next part. Mullah says that what is written in the Quran is for us, and its interpretation is for us only. कुरान के बारे में मौला का ये फरमान है। तो अगर ये फरमान को ले हो तो ये ओ बिलीवर्स बिलीव इज फॉर मी, दैट्स अ डायरेक्ट फरमान ayat for us saying now that you have taken the bayat, believe in, follow it. तो ये फर्स्ट पार्ट का मैं यहाँ पर रखता हूँ, and we can take the question. Let me summarize first, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें की हैं. So I would just say कि हमने दुआ का सूरह फातिहा को लिया, which has different names. It is the Surah Shifa, meaning healing, Surah of healing, Kitab, mother of Quran, right? And with the help of translation, we are trying to understand the meaning of this surah. So first we said Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahman and Rahim both have same meaning. Whenever there is same meaning word, meaning there is a secret hidden in those words. So what is the secret? Secret is that Rahman is for all the humanity, Rahim is only for smileys. How do we know that? Imam has two titles. Imamun Nas, he is the Imam of the whole humanity. Do they believe or not, that does not matter. Imam is the Imam for whole humanity. हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा. We just read it in Quran, right? So Imamun Nas, he is the Imam of the whole humanity, and that characteristic, that attribution is from the word Rahman. When we say Rahim, the title of the Imam is Imamul Muttaqeen, the Imam of the righteous. Those who follow the Imam are the righteous people, are on the right path. So Imamul Muttaqeen, meaning the Imam of Ismailis, we being Ismailis, he is our Imam, he is close to us. That is why he calls us my beloved spiritual children. He does not give this title to other humanity, just to us. So we are blessed in that way. Then second verse we did Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All the praises are for the Rabb who nourishes the whole Alameen. Now there's Alameen is a plural. Alam meaning one alam, one universe. Alameen is multiple universe. So how many universes are here? He is the sustainer of all the universes, not just one. And which universe we are talking about? The universe within us. When Maula Ali said that you think of yourself as a small being, but the whole universe is within you. So that's the universe which is being sustained. And in Imam Jafar Sadiq has given us this term, personal world, meaning Alam-e-Shaksi is Shaks ka Alam. So personal world, he sustains the personal world, right? Word Rabb is also important because it has the characteristic of a mother. Mother is the one who nourishes children at home. She is caring for children, and Imam is our mother. In Maula Ali's time, Imam was our mother and Prophet Muhammad was our father. But in current time, Imam has the Piratan as well as the Imamat. That's why whenever he sends Talika to us, he says, I send you my maternal, paternal, loving blessings. Right? So he is our Rabb, and we seek
help, guidance from our mother. Okay? So Rabbul Alameen. And then Ar-Rahman Ar-Rahim. Again we are reminding ourselves that He is Rahman, He is Rahim. He is not only taking care of us only. He is not mine only. He is of everybody. But He is mine too. So remember the duality of His name and understanding that He is merciful for everybody. Okay? Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. He is the one who is the master of the day of judgment. That's another very interesting thing. He is our mother, but He is also the master. Remember, if we were to ever think of dying, the only thing we would worry about, what will happen to my, at the day of Qiyamah, day of judgment? How would be my deeds? When we read this surah, the surah of healing, all these are worries. Okay, worries make you sick. Think of it like that. That He is my mother, He is my master of the day of the judgment. If I seek her guidance, He or she sustains me, being my mother, the day of judgment will be what? He'll take care of me. Right? However, it is important to know Him as the day of judgment. Remember, in Quran, every word is living too. And these are characteristics of Imam, meaning they are all living attributions of Imam. Do we know Imam as the day of judgment, master of the day of judgment? This is something to think about, right? And then, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. We worship You and we seek Your help only. Nobody else. Nobody else. There's a beautiful Ginan. Meaning same verse, it's in the Ginan. So हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं. Nobody else but Him we ask for help. Ehdina siratal mustaqim. There is a saying that He is my Lord. Imam is my Lord. He is my siratal mustaqim, and I walk towards Him. In Quran there is a saying, there's a verse which says, don't just walk but run. So are we running? And He explained it very well, so we understand that we are trying to run on the path, we will not stand on the path. The way we have heard this story, that a person has found Mawla Ali's door and he's just standing at the door. I found Ali, I found Ali. That's not enough. We have to knock the door and go on further, right? And then, Siratal lazina an'amta alayhim ghairil maghzubi alayhim walazwalin. So we now know that there are three groups. Till today we thought of two groups, but now there are three groups. The one who were given rewards, the one Allah is Gazab Dhaya, and third are Kafir, Gumrah. Gumrah, ठीक है ना? So within these three, we will have to find out and ask what are the definitions and where are we standing. Hopefully on the first one, those who have been rewarded. Right? That's it. सर आपने वो एक अच्छी एग्जांपल दी थी अर-रहमान रहीम, वो बेटे की एग्जांपल दी थी आपने कि वो बेटे को बुलाता है या वसीयत करता है, तो वसीयत में क्या देता है उसको? सब बेटों को देता है या पर्सनल बेटे को देता है? हाँ, तो ये स्टोरी है कि father has 5 children and one of the child is very obedient, listening to the parents instructions and doing as parents are saying. At the time of parents writing their will or they're passing away from this world, who would they give their properties? To the one who has always been obedient to them. So it's that's how we have to see it, that if we are the obedient child, he will give his khilafat to us. So he is the one who is the emperor actually. He is the emperor. The job of the emperor is he 54-55. He is the one who makes the king. So Imam is actually not the king. In Quran it says if we were to follow him, he makes us king. How? Because he is the emperor who can make kings. So मेरा मौला जो है वो बादशाह नहीं है, वो शहंशाह है. So, how she was saying that sometimes we worry what's going to happen to us when we die. Right? And then she said, if Ali is our mother, Ali is Rahman and Rahim on us, He is the master of the day of judgment, why are we worried?
अगर आपकी माँ आपको लेने आती है तो आपको तो मज़ा आएगा ना कि चलो माँ ने बुलाया, मैं जा रही हूँ माँ के पास, राइट। तो ये वाली तस्वीर हमारी पुरानी दुआ के अंदर से है, ये वाली तस्वीर। और ये पुरानी दुआ नीचे नज़र आ रही है आपको यहाँ पर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। ओके, गो बैक टू दैट, या राइट हियर। ये कुरान की दो अलग-अलग आयतों को जोड़कर ये तस्वीर बनाई गई है। अब यू कैन से वन इज़ फ्रॉम दी सूरह आल इमरान 3:173 एंड वन सेकंड पार्ट इज़ फ्रॉम दी सूरह 8 आयत नंबर 40। तो यहाँ पर कहा जाता है अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर अस, मोस्ट एक्सीलेंट ही इज़ टू होम वी ट्रस्ट, द बेस्ट टू प्रोटेक्ट एंड द बेस्ट टू हेल्प। तो यहाँ पर जो वर्ड है सफिशिएंट जो कहा गया है, ऊपर अगर आप देखेंगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इफ इमाम इज योर वकील on the day of judgment, who you think gonna win the case? That is the meaning. When we understand the meaning, हमको सुकून होता है, we get a peace. You know, we understand our tariqa, we understand the imam and how he works. Right now we know imam, we don't understand him, nor we know how he works. That's how he works. He becomes our wakil, he becomes our mother, and he takes us. So we should do good deeds, so our mother, our wakil, can take us on the other side without any issues and any problem. You know, this makes me feel that, you know, makes me, I recall my mother, okay? A mother's love you can only know by seeing your mother. And if you think of mother, she would always protect her children, no matter what. That is the imam for us. Imagine the ishq, the love you would feel if you were to see him like that, and when you recite dua, you'll feel the peace and love so much so that you'll be like, have tears in your eyes. Imam loves me so much, and I never knew that. He is sufficient for us, the most excellent. He is whom we trust, the best to protect and best to help. Do I need anybody in the world? Do I need anything else? He loves me so much, you know, and that's how Pir had developed such kind of ishq for Imam. And then they wrote these beautiful ginans, which when we listened the melody of it, we enjoyed so much. Beautiful ginan today you sang, right? मीठा सो मीठा कड़वा भी मीठा जो होवे नजर तुम्हारी आशा, कितना beautiful, you know. So it's that meaning of dua matters more than the translation. Then only you'll connect with the every word and tears will flow from your eyes. Oh my God, I'm so blessed. Shukramdulillah, shukramdulillah. Yeah? I would like to. So, any question? Ji. Maybe not question, but Imam keeps saying in his Quran, I wish my Jamaat would recognize me. Yeah, right. So, if you're just following the Shariah, how do you actually recognize him without understanding things like this? So, not a question, but just Yes, because he keeps saying that in his. Subhanallah. Said it in. Yeah, so this is Russia's Farman, Moscow Mullah says that I want my Jamaat to recognize me. And the question would be, don't we know our Imam? Apparently not. Otherwise, why would Imam say that? And Golden Jubilee event was the perfect time when Imam, with a sad face, we all know this story. If not, I think Quran says new, and they are new. Okay, so let me tell you the whole story. So, 2005, couple of years before Golden Jubilee, when our LIF members went to Mullah and said, we have a plan for your Golden Jubilee, we will collect and present you with a Nazrana, and they gave a number, X amount of dollar we will submit as a Nazrana for the Golden Jubilee. Right? So Imam says, if that's what you want to do, fine. He did not show any excitement. He said, but I want my Jamaat to give time and knowledge Nazrana. And he introduced time and knowledge Nazrana to the Jamaat.
and he told the leaders to go and think, how are we going to do this? Plan it. We have a 2 year to plan it. Then the LIF members, the leaders asked Mullah, Ya Mullah, what would you like for your Golden Jubilee? Up until this point, Mullah's face was like glowing. He was talking about Golden Jubilee. He was happy. When they asked that question, Mullah's face just went down. You can see he was sad. He was not happy anymore. Mullah, what would you like for your Golden Jubilee? You know what Mullah says? I wish my Jamaat recognized me. That's it. That was Imam's Golden Jubilee wish for the Jamaat. I wish my Jamaat would recognize me. Of course, leaders were all puzzled. Don't we recognize you, Mullah? After 50 years, don't we know you? Mullah said, no, I wish you would recognize. Leader, they did not know what to say or what to do. They said, Mullah, why did you guide us? Tell us, how would you like us to recognize you? And then what did Mullah give us? You all remember, Mullah gave us two things. Ayah Nur and Hadith Saklain. He said, take this to the Jamaat. And then Mullah said, if you understand and you make my Jamaat understand, then they will recognize me. And he gave those two things. And I remember in every single Jamaatkhana in the world, the members of the LIF, they went around the world. Like our president or our chairman, they went to all Jamaathanas and told this story and told us what Mullah has given us. And then it was returned, it was explained to us. For 18 months we recited those two things. The Ayah Nur and Hadith Saklain. After 14 years now, this is 2005, this is 2019. Do we recognize Imam? Mullah guided us. He gave us those two things. So we may recognize Imam. And this morning, that's exactly what we are doing. We are trying to follow that Farman of Golden Jubilee. We are running a little bit behind, about 14 years. But we are doing exactly that. We are trying. We are trying to recognize the Imam. And I think the understanding or learning the meaning of the dua is the first step to recognize him. Inshallah. हो सकता है. So I believe that. लेकिन देखिए अगर हम इमाम के फरमान की बात करें तो दो फरमान इन्होंने भी कहा, एक रशिया का 2000 का और एक खारदर अक्टूबर 2000 का, जिसमें मौला फरमाते हैं कि seek those classes, वर्ड यूज करते हैं मौला, where religious education is given. Clearly word. Same year, वहाँ पर कहा कि recognition में माँ, यहाँ पर कहा seek those classes where knowledge is given. And he did not mention REC. Did he not know about REC? Why didn't he say REC? Because he was not talking about REC. क्योंकि ये पर्सनल सर्च की बात है. उसी फरमान में आप देखेंगे तो मौला इस टॉकिंग अबाउट पर्सनल सर्च. जब हम अपना खुद की कुर्बानी देकर when we seek, अगर हम सीख नहीं करते हैं तो पर्सनल सर्च का फरमान तो हमने सबने सुना है, मल्टीपल टाइम सुना है. और ये फरामीन भी जो है हमारे जमाने में भी पढ़े जाते हैं. खारदर के फरमान है, 2000 के रशिया का फरमान है. खाली मैं ये कहता हूँ, अगर ये फरमान हमको याद है और हमने सुने हैं तो हमने सब ने सुने हैं. क्यों? कि हम सब एक ही जमात में जाते हैं. ना तो उन लोग मेरे को कोई फरमान की किताब देते हैं, ना आपको देते हैं. राइट? जो भी फरमान जमात में पढ़े जाते हैं वही फरमान है, आपके लिए भी मेरे लिए भी. सो लेट्स पुट इट ऑन अस. Am I paying attention to it? Number one. Number two, do I understand? And number three, main thing, when I don't understand, enough courage in myself to say I did not understand, please explain. It's okay to say I don't know.
There's nothing wrong with it. हम दुनिया में करते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं प्लीज मेरे को फ़ोन चलाना सिखाओ, कोई शर्म की बात नहीं है. अगर if I don't know how to use a computer or a phone or any device at work, I do ask my coworker to teach me. What's wrong with that? You can ask. I don't understand. Can you teach me? जी, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है. हम सेकंड पार्ट, पूरा पार्ट नहीं किया, हम सिर्फ आयत की. Then inshallah we have recorded lectures on entire meaning of the dua. You guys can listen on your own. ठीक है ना. ये खिलने सर का जो सवाल था कि we sometimes we don't know, तो ये जो है दुआ की किताब के पहले पेज पे लिखा हुआ है ये फरमान. ठीक है, ये दुआ की किताब के पहले पेज पे लिखा है कि दुआ के मानी भी समझे. ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और हमारी जमात के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी चीज़ है कि आप में से हर एक, ख़ास तौर पर जमात के छोटे मेम्बरान को दुआ के मानी समझने चाहिए. ठीक है ना. LIF did not have to bring this message to us. It is in front of our Bible. How many of us are learning the meaning of the dua? Right? So we can say, it's easy to say, well, they didn't tell us. But this Farman is in front of our book. Then we need to work hard to understand our tariqah, our imam, and then follow on his Farman. फिर सारी चीज़ें जो है ना हमको दुआ के अंदर से ही we will understand the concept of imamat, recognition of imamat, the concept of Ali Allah. We will know all of that just from our dua. मैंने कहा ना कि we are just starting with the dua. What about other things that we do? यहाँ से ही आपकी बुनियाद पड़ेंगी. This is the foundation. चलें तो इसको दोबारा से स्टार्ट करें. गिनान शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ. हाँ, I know. Because I mentioned and Shanaz shared with Amit, so I just need, I'm going to read it quickly. कि गिनान जो है by P. Saladin, हक तू पाक तू बादशाह मेहरबान भी अली तू ही तू. You are the truth and the just, you are the pure and the majestic king. You are also the gracious and merciful. O Ali, you are all. So this is from Bismillahir Rahmanir Rahim. Rab tu Rahman tu, Ya Ali awwala akhir qazi tu hi tu. You are the sustainer. You are the merciful, O Ali. O Ali, you are the first and the last judge. You are all. So that's why we call him mother. That's why we, yeah. Huwal awwal, huwal akhir, 57 ki 3. So this verse, if you were to look at the Quran, Surah Hadith 57 ki 3, it's exactly this part which is we are reciting in this Ginan. Te upaya, te nipaya, sirjanhar, Ali, tu hi tu. You originated and you established order. You originated, you established order. O Ali, you are the creator, you are all. I hope I'm answering the question. Jal tu, jal thal mol mandar harna, Ali hukum tera, ya Ali tu hi tu. In the water and on the land, pani mein tu, zameen mein, you have led the roots everywhere, foundation and creation, right? Everywhere. O Ali, everything therein and on is at your command. You are indeed all. तेरी दोस्ती में बोलिया पीर शमस मैं बंदा तेरा अली तू ही तू. In your friendship, Pir Shams says, माफी Pir Shams का गिनान है. In your friendship, Pir Shams says, I am your servant, O Ali, you are all. तू ही तू मौला, तू ही तू. क्या खूबसूरत गिनान है. लेकिन इस गिनान के अंदर सूरह फातिहा की बात की गई. और तेरी दोस्ती में वो वाली बात हो गई कि आपका दोस्त अगर वकील इमाम है, तो what do you need to worry about? Yeah. Subhanallah. Thank you for sharing. And even at Gadir Khum,